इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानपुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ, मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए। हाँ, मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Hello and good afternoon, everyone, and thank you so much for joining us on this webinar called Business Opportunity Over Chai. Business Opportunity Over Chai is a webinar series presented by Management of Franchise India every day at 12 o'clock in the afternoon with an aim to introduce you to a new business opportunity. Over the last 27 years, Franchise India has helped thousands of investors selecting the right franchise business for them. Today, we will introduce you a new business opportunity with a premium ice cream brand from Noida called Melting Scoop. Melting Scoop is a premium ice cream brand built on a 60-year-old family recipe, best known for its signature pineapple flavor. Committed to quality and purity, the brand Melting Scoop uses 100% natural ingredients with no palm oil, preservative, or chemicals. These ice creams are light, creamy, irresistible, delicious, offering an wholesome indulgence that customers can love. The brand is now offering a franchise opportunity for investors in northern part of India, specifically in Delhi NCR. To talk more about the brand and the business opportunity, I'm joined with the founder himself, Nishant Goyal, along with Vice President Sales, Franchise India, Amit Verma. Before we talk more about the brand and the business opportunity, right, I would like to inform all the viewers that you also have an opportunity to ask questions related to the brand, the business model. I would request you all to please keep on posting your queries into the Q&A box to make this session more interactive. We will take all your queries post the brand presentation. Now, I would request Nishant himself, the founder of this brand, to come forward and first, let's start with your intro, and then we'll move on to the presentation part. Right. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hello, everyone. Myself, Nishant Goel. I'm the founder of Melting Scoop. And this brand is basically, as you all know, we make ice creams. I'll give you a brief background about myself. I'm a chartered accountant and I qualified at an age of 22. I was working with Big Force in Gurgaon for 3 years. And during my job journey, I always had this childhood dream to start a food business. And एक पैशन होता है फूड के लिए कि भाई कुछ करना है एंड ऑब्वियसली आई हैव दिस फैमिली रेसिपी ऑफ अ आइसक्रीम माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज इनटू मेकिंग आइसक्रीम और उनके होम टाउन में दिस आइसक्रीम इज वेरी फेमस पाइनएप्पल आइसक्रीम तो उनका जो बनाने का आइसक्रीम का तरीका है दैट इज वेरी यूनिक एंड इट ऑब्वियसली इट्स अ 60-year-old मेथड जहाँ पे हमारे पास आइसक्रीम के लिए मॉडर्न मशीनरीज नहीं होती हैं तो और जो उनकी रेसिपी भी है इट डजंट यूज एनी केमिकल्स फूड कलरिंग्स बिकॉज उस टाइम में इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी तो मेरा एक ये पर्पस था कि मैं इसको ब्रांड को लॉन्च करूं
or with this own particular ice cream melting scoop. ये सॉरी सो हमने 2020 में स्टार्टेड दिस ब्रांड और हमने कार्ट पे स्टार्ट करा. दिस कार्ट वाज कार्ट, वी ऑप्टेड फॉर द कार्ट मॉडल एंड वी लॉन्च्ड ओनली द पाइनएप्पल आइसक्रीम. हमारी आइसक्रीम का जो यूएसपी है, अगर आप किसी भी आइसक्रीम को देखते हैं मार्केट में आज के डेट में, मेजॉरिटी ऑफ आइसक्रीम्स हैव इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजर्स इन दैट. इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ आवर आइसक्रीम. हमारी आइसक्रीम के अंदर क्या है, हम ये स्टेबलाइजर इमल्सिफायर यूज नहीं करते हैं एंड वी स्टिक टू वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स लाइक मिल्क, क्रीम, शुगर एंड वी यूज द नेचुरल और द एक्चुअल फ्रूट दैट इज देयर. कार्ट मॉडल के लिए हमने ऑप्ट करा बिकॉज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यूरिंग माय 3 years ऑफ जॉब जर्नी, आई हैव सीन मैनी ब्रांड्स कम एंड गो. उसका मेन रीजन होता है उनकी रेंटल कॉस्ट, बिकॉज उनके रेंटल्स काफी हाई होते हैं बिकॉज दे हैव टू टेक अ वेरी प्रीमियम लोकेशन. एंड सेकेंड रीजन इज मार्केटिंग. आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है, अगर आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, पीपल डोंट नो अबाउट इट, नोबडी इज गोना बाय इट. सो मार्केटिंग फॉर एनी ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये दो चीजें आई हैड टू बीट देम बिकॉज अगर इनिशियली हम किसी भी शॉप में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं, वी डोंट हैव दैट मच फंड बिकॉज हमें ब्रांड को लॉन्ग टर्म में रन करना है. तो वी ऑप्टेड फॉर कार्ट मॉडल. कार्ट मॉडल में दोनों चीजें हमने बीट करी. किस तरीके से? फॉर कार्ट, इफ यू आर पार्किंग दैट ऑन द रोड, हमारे लिए कोई हाई रेंटल्स नहीं है. सेकंड प्रॉब्लम आती है लोकेशन की. अगर मैं किसी मार्केट में अपनी कार्ट को पार्क कर रहा हूँ एंड आई थिंक कि मेरी सेल वहां पे इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो आई कैन इजीली चेंज द लोकेशन ऑफ माई कार्ट बिकॉज इट इज मूवेबल. तो यहाँ पे मुझे एक एडवांटेज मिलती है कार्ट के साथ. सेकंड वाज मार्केटिंग. मार्केटिंग को हमने कैसे बीट करा? सबसे पहले हमने अपनी कार्ड्स पे ना नियॉन लाइट यूज करनी शुरू करी, विच इज आई थिंक फर्स्ट इन द मार्केट. कार्ड पे अभी भी कोई नियॉन लाइट यूज नहीं करता है. नियॉन लाइट इज वेरी ब्राइट एंड अट्रैक्टिव. तो अगर आप इंडियन मार्केट में जो आइसक्रीम की सेल है, अगर आप उसे देखेंगे, दैट इज इवनिंग एंड नाइट सेल. और अगर आप नाइट में, इवनिंग में अपनी कार्ट लेके रोड पे खड़े हैं एंड यू आर हैविंग नियॉन लाइट्स, वो इतनी ज्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव होती हैं, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर मार्केटिंग. सेकंड, हम लोगों ने क्या करना शुरू करा, हम कार्ड्स को सोसाइटी के बाहर पार्क करते थे. एंड इफ यू सी, जितनी भी मार्केट में कार्ड्स हैं, अमूल, वाडीलाल, हैव मोर, कोई भी आपको कार्ड्स पे ना टेस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता. तो व्हाट वी डिड, हमने आइसक्रीम की टेस्टिंग प्रोवाइड करनी शुरू करी. बिकॉज आप लोग ये समझिए, फूड इंडस्ट्री के लिए ना आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो दैट माई प्रोडक्ट इज केमिकल फ्री, हेल्दी, व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स इज द टेस्ट. आप प्रोडक्ट को कैसे भी बना रहे हो, अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं है ना, नोबडी इज गोना बाय इट, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो. नहीं, आई हैव सीन मैनी ब्रांड्स जो हेल्दी प्रोडक्ट्स बना रही हैं पर उनका टेस्ट अच्छा नहीं है, नहीं सेल आउट होता वो. तो फर्स्ट थिंग इज टेस्ट. तो हमने सोचा अगर हम कस्टमर को टेस्ट करा रहे हैं अपना प्रोडक्ट, तो वी डोंट नीड टू एजुकेट हिम कि हमारा प्रोडक्ट हेल्दी है, मिल्क है, क्रीम है, नथिंग. टेस्ट इज गुड, ही इज गोना बाय इट. तो हमने सेकंड मार्केटिंग अपनी ये शुरू करी. इस मार्केटिंग में ना आप समझो कोई खर्चा नहीं होता ब्रांड का. टेस्टिंग इज नॉट अ एक्सपेंस, लाइट यूज करना इज नॉट अ मार्केटिंग एक्सपेंस फॉर मी. और इसके बाद हमने क्या काम करना शुरू करा, जब हमें लगा 6 months में वी वर हिट एक्चुअली. इन 6 months हम डे वन से प्रॉफिटेबल थे. और हमारा जो ये मास्टर प्रोडक्ट है, दैट इज पाइनएप्पल आइसक्रीम, इट वाज लव्ड ऑल ओवर बाय कस्टमर्स बिकॉज उसके अंदर एक होमली फील है. आप जब आइसक्रीम को खाओगे ना, आप यू विल फील कि हाँ, इट इज मेड यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. तो हमने विद इन 6 months भी एक्सपेंडेड कार्ड फ्लीट, हमने 5 और कार्ड्स ऐड करी. एंड हमने एक और मेजर मार्केटिंग रोल प्ले करा इसके अंदर. हम क्या करते थे, लाइक ड्यूरिंग अ वीक वी यूज्ड टू चूज वन डे, लाइक सपोजिंगली संडे, जहाँ पे क्राउड जो होता है ना, सब लोग मॉल जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो रोड पे ना एक रश होता है. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम कार्ड्स की ना रैली करते थे. ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम वी यूज्ड टू चूज अ स्पेसिफिक टाइम जहाँ पे रश होता है. हम अपनी सारी कार्ड्स की नियॉन लाइट ओपन करते हैं एंड वन, मतलब एक के पीछे एक, वी यूज्ड टू डू अ रैली ऑफ 6 कार्ड्स ऑन रोड. अब आप समझिए, उस टाइम पे अगर आपकी कार्ट में दिख रहा है, उसे आइसक्रीम नहीं खरीदनी है आपसे. My purpose was to hit his mind again and again with melting scoop name, which is what marketing is. मार्केटिंग में क्या होता है, आप कस्टमर को बार बार हिट कर रहे हो दैट ओके, मेल्टिंग स्कूप यहाँ भी है, यहाँ भी है. तो जब हम रोड पे रैली करते हैं, लोग उसको अननोइंगली देख रहे हैं, क्योंकि उसकी लाइट इतनी ब्राइट, और एक के पीछे एक जब 6 कार्ड्स आ रही है, तो दे आर सीइंग यार है क्या. देन सेकंड, हमने इसके अंदर और तीसरी चीज हमने क्या करी, बिकॉज आई वाज इनटू जॉब, मैं गुड़गांव में वर्क करता था एंड आई यूज्ड टू कम बैक टू नोएडा. तो आई सॉ कि पर्टिकुलर टाइम पे ना, फ्राइडे को मैनी पीपल आर कमिंग फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा बैक होम. और एक पर्टिकुलर टाइम होता है आपका 7-8 बजे का, जहाँ पे रोड पे बहुत ज्यादा रश होता है. सो व्हाट वी यूज टू डू, हम एक रोड को पिक करते थे एंड वी यूज टू पार्क कर कार्ट थोड़े थोड़े गैप पे. पूरी सारी की सारी 6 कार्ट्स थोड़े थोड़े गैप पे पार्कड होती थी.
अब जब वो ट्रैफिक जा रहे हैं ना रोड पे, तो ही सीइंग द फर्स्ट कार्ट कि यार ये है क्या, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 90% चांसेस होते हैं कि वो सिक्स्थ कार्ट से पहले पहले ना ही विल स्टॉप, ही विल सी कि यार है क्या, एटलीस्ट देखूं तो इतनी सारी कार्ट लगी हुई है, व्हाट ही इज एक्चुअली सेलिंग। एंड वंस यू हैव 5 6 कार्ट्स, मतलब कार्ट पार्क्ड आउटसाइड योर कार्ट, कस्टमर ना ऑटोमेटिकली, एक मेंटेलिटी होती है, साइकोलॉजी, आपको किसी भी दुकान पर रश दिखेगा, अननोइंगली आप उस दुकान पे जाओगे ही जाओगे, बिकॉज आपको देखना है यार इतनी भीड़ लग रही है किस चीज के लिए, क्या है ऐसी चीज जो ये लोग सेल कर रहे हैं। तो दिस वाज अनदर मार्केटिंग पॉइंट जो हमने यूज करा अपनी ब्रांड के लिए। एंड आई कैन प्राउडली से हमने 2020 में हमारी एक कार्ड थी, एंड टुडे 2024 एंड में मेल्टिंग स्कूप के टोटल 30 सेलिंग पॉइंट्स हैं नोएडा और नियर बाय एरियाज में। अब सेकेंडली हमने और मार्केटिंग के लिए और क्या मतलब प्ले करा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ मार्केटिंग के लिए हमारा थॉट प्रोसेस क्या था, हमें मार्केटिंग पे खर्च नहीं करना, स्पेंड नहीं करना, स्टिल वी वांट टू डू मार्केटिंग। हमने अपनी कार्ड्स के फिक्स लोकेशन बनाए, एंड वी स्टार्टेड डूइंग स्विगी एंड जोमेटो फ्रॉम दैट। स्विगी एंड जोमेटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग देता है, ऑन बोर्डिंग का कोई चार्ज नहीं है, एंड कस्टमर ऑलरेडी नो अस। तो क्या होता है, उनकी एक फैसिलिटी भी मिलती है, प्लस वी हैव मार्केटिंग। देन हमने गूगल बिजनेस अपना बनाया, एंड वी यूज टू टेक रेटिंग्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो धीरे धीरे विद इन अ ईयर वी सॉ कि हमारी ब्रांड जो है वो नोएडा के बाहर भी फेमस हो रही है, पीपल आर कमिंग फ्रॉम गुड़गांव, कमिंग फ्रॉम गाजियाबाद, फ्रॉम फार डिस्टेंसेस, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ, ये जो मार्केटिंग है। एंड दे यूज टू कम टू अस एंड टेल अस कि यार मैं बहुत दूर से आया हूँ जस्ट टू ट्राई योर आइसक्रीम, बिकॉज मैंने इतना सुना है, एंड मुझे लगा यार जाना चाहिए, देखना चाहिए कि है क्या है एक्चुअल में। सो दिस वॉज अ जर्नी हाउ वी स्टार्टेड। अब अगर मैं ब्रांड के आपको यूएसपी के बारे में बताता हूँ, वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कार्ट बहुत लोग कर रहे हैं मार्केट में, बट आपने कार्ट पे जितनी भी आइसक्रीम देखी है, दोज आर ओनली पॉप्सिकल्स, और वो मेजोरिटी जो रेट उनका रेंज है दैट इज 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज। आप बेस्किन रॉबिन्स, ज्ञानीज, कोई भी बड़ी ब्रांड को कार्ट मॉडल पे नहीं देखोगे आप लोग। आई डोंट नो व्हाई पीपल हैवंट डन दिस, बट इट इज अ वेरी गुड थिंग। हम स्कूप वाली आइसक्रीम करते हैं, एंड वे वी डू इट ऑन कार्ट, वी प्रोवाइड सैम्पलिंग। बिकॉज हमारी ब्रांड का पर्पस क्या है, अगर अब मैंने कोई बहुत बड़े मॉल में एक शॉप ओपन करी है, कस्टमर विल हैव टू कम टू मी, उसे कार्ट पार्क, अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी, और फिर उसे मेरी शॉप पे आना पड़ेगा। कार्ट इज समथिंग कि मैं अपने कस्टमर तक जा रहा हूँ। अब आप समझिए आइसक्रीम एक ऐसी चीज है, आफ्टर डिनर, हो सकता है सैटरडे संडे, यू जस्ट डोंट वांट टू गो टू द मॉल, आपका मन हो रहा है ठीक है मैं नीचे जाता हूँ, आई विल जस्ट डू अ वॉक एंड आई हैव आइसक्रीम विद माय वाइफ और विद माय किड्स। तो आपको आइसक्रीम एक ऐसी चीज है जो आपको ऑन द गो चाहिए। सो दिस इज अ वेरी गुड मॉडल, और हमने इसी चीज से स्टार्ट करा, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी बिकेम अ हिट। इसके अलावा हमारी ब्रांड का फोकस होता है कस्टमर रिटेंशन पे। कस्टमर रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, मार्केटिंग अच्छी कर ली, अब आपका कस्टमर अगर रिटेन नहीं हो रहा, देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म। So this I have learned from my grandfather and my father. He used to tell me one thing कि बेटा क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, और कस्टमर इज लाइक गॉड। कस्टमर को अगर आपने नाराज कर दिया ना एक बार, तो आप समझो आपका बिजनेस लाइफ टाइम के लिए चला गया उस कस्टमर से। सो हमारी ब्रांड का एक बहुत बड़ा मोटिव है जो हम अपने सारे स्टाफ के अंदर, वेंडर्स के अंदर भी इनकलकेट करते हैं। वी हाईली फोकस ऑन कस्टमर सर्विस। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। हमारी कार्ट पे एक बार एक कस्टमर आए अपने बच्चे के साथ, एंड वी गेव हिम कोन, कोन में उन्होंने आइसक्रीम ली, और वो, ही इज अ किड, ही डजंट नो, उसने आइसक्रीम को रोटेट करा और वो आइसक्रीम कोन से गिर गई। नाउ कस्टमर नोस कि यार ठीक है, गलती तो हमारी, अब क्या बोल सकते हैं। तो ही आस्क फॉर अनदर आइसक्रीम कि भैया कोई नहीं, आप आइसक्रीम दे दो, चार्ज कर लिया। सो वी एज अ ब्रांड डू दिस, हमने कहा कोई नहीं मैम, आइसक्रीम हैज फॉलन, नो इश्यूज, विल प्रोवाइड यू अ कॉम्प्लीमेंट्री रिप्लेसमेंट फॉर दैट। तो इस तरीके से हमने क्या है, अपने कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश करी। नाउ आई कम टू फ्लेवर्स, आई शो यू द ब्रांड डेक, जस्ट अ सेकंड, आई शेयर माय स्क्रीन। Okay, meanwhile, in case if anyone will have any question, right, please keep on posting it in the Q&A box, not in the chat box, Q&A. There will be an option Q&A, right? That is where I would request you to please post your queries. That makes us easy to, read that. Yep. Let's start the presentation, Nishan. जस्ट I think I'm unable to share the screen. Okay, now it is. Bharat, is my screen visible?
Screen is visible. Yeah, yeah, yeah. Please put this in a full screen. It's better. Yeah, perfect. Yeah, yeah, sure. So this I've already told you, it's a heritage recipe. मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की रेसिपी है, विच इज अ 60-year-old रेसिपी, और हम इसको उसी ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, विच इज वाई हमारी जो आइसक्रीम का माउथ फील और टेक्सचर है, दैट इज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक. Now we come to this. Obviously, a melting scoop we started in 2020, and it's been 4 years, and we have now 10 flavors in a menu. We launched pineapple, and we have introduced other flavors as well. The vision and mission of our brand is obviously we want to stick to the quality that we focus on, 100% natural ice cream. We don't use any artificial flavors, colors. I'll tell you one more thing. If you see in the market, they are not just using emulsifier and stabilizer. There's one more ingredient that goes into every good brand ice cream, that is dextrose, which is proven to be highly diabetic. It causes diabetes. That is the main reason, dextrose. It's a kind of sugar. And we highly refrain from using any product that is harmful. So we use basic ingredients, milk, cream, sugar, and the actual fruit or chocolate that goes into making the flavor of the ice cream. Why did we started a commitment? Obviously it started as a childhood dream, but now we are committed to making good quality products and launching it in the market to give people something that they can trust on. Because आजकल लोगों के पास spending capacity की problem नहीं है. Now the family size has reduced, and the both the husband and wife both are earning. So spending capacity की problem नहीं है. What they need is quality product. What makes your ice cream special? It's the homemade taste, because it is made using the pure ingredients and an old way. So जब आप आइसक्रीम खाओगे, you will have that feel कि यार कुछ मतलब घर जैसी चीज हम खा रहे हैं, which is healthy and natural. We have natural flavors and we use real fruits as well. These flavors are seasonal. Supposingly we are doing mango or strawberry, so we have maintained a curiosity in our customers that the mango will be available during a particular period of time in the year and strawberry will be available. So they have a tendency to come again and again to check what we are offering, what new flavor has come in. So our menu is not like कि हमने 10 flavor offer करे and throughout the year 10 flavors ही आपको मिलेंगे. We keep on adding items based on the seasonal fruits. This is a menu. So here it shows, I'll show you the new menu. Here we have total 11 flavors in the menu. और जो हमारा प्राइस पॉइंट होता है वो कप के लिए वी आर गिविंग इन कप waffle cone, and we have 500 ml family packs that we are offering to the customers. टोटल हमारे पास 11 फ्लेवर्स 12 फ्लेवर्स हैं. अगर आप देखेंगे इसमें से स्ट्रॉबेरी हो गया, गुआवा, चीकू, दीज आर ऑल सीजनल फ्लेवर्स. इवन मैंगो के टाइम पे वी डू मैंगो. हमारी फ्रूट आइसक्रीम की स्पेशलिटी क्या है? अगर कस्टमर, मेरे साथ बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ, वन ऑफ अ ओल्ड कस्टमर केम टू मी, उसने बोला निशांत आप एक बार बताओ कि मैंगो आइसक्रीम में अभी कल खा के गया था और मैं आज भी खा रहा हूँ, टेस्ट में ना थोड़ा सा डिफरेंस है. एंड आई फाइंड जो आपकी मैंगो का कलर है ना, जैसे कल था वो आज नहीं है. So I explained to him very politely. I had a smile on my face कि सर जो आप मार्केट में खाते हो ना आइसक्रीम, दैट इज नॉट मैंगो आइसक्रीम. उसके अंदर वो मैंगो के प्रिजर्वेटिव्स, प्यूरी, केमिकल्स, कलर्स, एसेंस, ये सब यूज कर रहे हैं जिससे वो आपको एक कंसिस्टेंसी दे पाते हैं. अगर आज आप मार्केट में जाते हैं, मैंगो खरीदते हैं, कि आपको सेम रोज सेम टेस्ट का मैंगो मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा आपको. तो जब हम अपनी आइसक्रीम में एक्चुअल फ्रूट स्लाइटली डिफरेंस होगा अगर आप एक्चुअल नेचुरल फ्रूट यूज कर रहे हो. इवन वी डू स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी में अगर आप देखोगे मार्केट में जितनी भी स्ट्रॉबेरीज आपको मिलती हैं, स्ट्रॉबेरी इज वेरी स्वीट, बट एक्चुअल में स्ट्रॉबेरी एज अ फ्रूट इज नॉट स्वीट. इट्स स्वीट एंड सार, खट्टा मीठा होता है. तो द आइसक्रीम शुड हैव दैट एसेंस इन इट. तो वी स्टिक टू दैट. इवन हम चॉकलेट आइसक्रीम की अगर आप बात करें, रेट विल कम टू द रेट्स. कप जो है हमारा 80 रुपीज से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 150. waffle cone 100 and it goes up to 170. Accordingly, family packs are priced. अब आप चॉकलेट ब्राउनी देखेंगे, इट इज 150. आई वॉज ऑल्सो वेरी स्पेक्टिकल जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करा कि अरे रोड पे प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा. बीइंग अ न्यू ब्रांड, आई डोंट नो कि मैं इसके 150 रुपीज मार्केट में पिक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बट माई मोटिव वॉज नॉट प्राइस, इट वॉज क्वालिटी. मुझे चॉकलेट
वैसे ही बनानी है जैसे वो बननी चाहिए। अब वो चाहे महंगी बन रही है, सस्ती बन रही है, दैट इज नॉट माई कॉल, वो कस्टमर को डिसाइड करना है वेदर ही वांट्स टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट और नॉट। बिकॉज जब तक कोई चीज आप मार्केट में लॉन्च नहीं करोगे, अभी हमारी साइकोलॉजी क्या है, सस्ता प्रोडक्ट निकालो, ज्यादा बिकेगा, प्रॉफिट्स हाई रखो, एंड यू विल अर्न, बिजनेस बनाओ और बाहर निकल जाओ। बट दिस इज नॉट जस्ट अ बिजनेस फॉर मी, दिस ब्रांड इज माई ड्रीम। तो मेरा इसके अंदर फोकस यही है कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूँ। तो जब हमने चॉकलेट आइसक्रीम बनाई, वी यूज ओनली कैल्यूबू। कैल्यूबू, अगर मैं आपको थोड़ा सा चॉकलेट का डिफरेंस समझाऊं, देर आर टू वेराइटीज, वन इज कवर्चर, वन इज कंपाउंड। कंपाउंड जो होता है चॉकलेट का, उसके अंदर पाम ऑयल यूज होता है बेसिकली, और जो कवर्चर होता है दैट यूजेस कोको बटर, विच इज एक्चुअल चॉकलेट। तो हम इसके अंदर कोको बटर वाली चॉकलेट यूज करते हैं, विच इज प्राइस्ड एट 10 टाइम्स ऑफ व्हाट द कंपाउंड कॉस्ट। तो आप सोचो उसकी कॉस्ट कितनी हाई जाएगी। बट वी स्टिक टू दैट, हम यही बनाते हैं और हम यही सेल करते हैं। टू माई सरप्राइज, चॉकलेट ब्राउनी इज द सेकंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आफ्टर पाइनएप्पल। इट इज द सेकंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट फॉर अस। बहुत ही बड़ी मार्केट है हमारे लिए इसकी। जो हमारे कस्टमर आते हैं, दे रियली अप्रिशिएट। मतलब वो बोलते हैं, सर बड़े से बड़ी ब्रांड की मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खाई है, बट द फील इज टोटली डिफरेंट इन दिस। तो दैट इज व्हाट मेक्स अस हैप्पी एंड मोटिवेट अस टू गिव more quality products to the customers. This is a look and feel of a cart, the neon light that I was talking about. तो हमने, आप देखिए कार्ट को किस तरह से लुक एंड फील दिया है कि वो बहुत ही आई कैची है। इवन इफ यू सी द कप्स है, जो फोटो में आप देखेंगे, तो कप पे जो हमारी स्पून है ना, वी हैव अ स्टिकर ऑन दैट। तो आई बिलीव ब्रांडिंग इज इन डिटेलिंग। आप कितना डिटेल में जा सकते हैं। हम अपनी स्पून के ऊपर एक स्टिकर लगाते हैं जस्ट टू मेक इट नॉट लुक अट्रैक्टिव, बट दिस शोज कि हम एक एक स्पून को पर्सनली फिजिकली चेक करते हैं। एंड इफ द स्पून इज नॉट गुड, वी रिजेक्ट इट। स्पून अच्छी होगी तभी हम उसके ऊपर ब्रांड स्टिकर लगाएंगे एंड विल गिव इट टू द कार्ड्स। एंड दिस इज अगेन अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर किड्स। अगर आप देखेंगे हमारी ब्रांड के लोगों में, वी हैव यूज्ड अ कोआला और अ टेडी बियर, यू कैन से, एंड इट इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर द किड्स। वो स्पून, जब वो चम्मच देखते हैं एंड दे सी उस पे कोआला बना हुआ है, दे जस्ट वांट टू टेक दैट स्पून होम, कि मम्मा दिस इज दिस स्पून आई वांट टू टेक, सम टेडी बियर। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बिकॉज आइसक्रीम जो होती है वो बड़ों के लिए तो है ही, पर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। Now we come to obviously the investors. Why do you have to choose the melting scoop? Obviously, because it is a 60-year-old recipe which you will rarely find in the market, and the quality and mouthfeel is very unique. These ice creams are handcrafted because the process that we use involves, a certain unique way which I won't be able to explain you here because it's a secret, processing. So it is handcrafted ice cream. Because we are not using any chemicals or emulsifiers, the feel of the ice cream is very light. It is light on your tummy. You won't feel heavy after having our ice creams. So it is very fresh, less sweet. We focus on using, not too much sugar. We don't have to make our ice cream very sweet. It should be good to eat, but not excessively sweet. Now, obviously, we are event friendly because we do parties and all these things are available. What is the USP of a brand? Strong brand identity. The marketing that we have done throughout the year, as I explained you, has created a strong brand identity for us in Delhi NCR. Better customer experience. Our focus is mostly on customer experience. We do no complaint refunds. If somebody is coming on my cart, आप देखोगे कार्ड जितनी भी मतलब आप थ्रू आउट इंडिया देखोगे, नन ऑफ द कार्ड्स हैव कंपनी नंबर ऑन इट। हम लोग अपना कस्टमर केयर का नंबर मेंशन करते हैं कार्ड पे। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और इश्यू, यू कैन डायरेक्टली कॉल अस एंड विल डू अ नो क्वेश्चन आस्क रिफंड। आपको इसमें समझना होगा कस्टमर के लिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम Amazon. Amazon पे if I purchase anything, I have a problem with that, they will return me instantly. रिफंड कर देंगे वो लोग, वो मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कस्टम फॉर द ब्रांड टू रिटेन द कस्टमर। तो आप समझो इसकी ना कॉस्ट ज्यादा नहीं है। इट इज वेरी चीप मार्केटिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आज मेरा कस्टमर मेरे पास आता है, आई जस्ट फ्यू डेज बैक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द कार्ड कि आपकी वेंडर ने फ्लेवर गलती से गलत दे दिया। he gave me wrong flavor of the ice cream what I asked for, and now he's declining कि नहीं मैम मैंने तो सही दिया है ये सब चीजें। Now what we do, we simply, ma'am, not an issue, we'll give you a complimentary product from our end, because that is very important. Customer को ना यही चीजें stick कर जाती है mind में, and they relate with the brand. Consistent product supply. If you are taking the franchisee, we have a very good supply chain, so it won't be a problem. We'll give you a very
fast deliveries, extensive outreach. We have multiple marketing channels, high quality standards. As I explained, we are stuck to that. We don't compromise on quality. Innovative product development. We keep on developing our products, marketing, then single window franchisee support. You have, one number to call. And now we talk about the ice cream market in India. It is 194 billion. It was in 2023 and expected to grow to 508 billion. And majority, if you see the flavor wise shares taken by chocolate and vanilla. So obviously we have two varieties of chocolate and chocolate brownie on our menu. Now this is the ice cream share by flavors and ice cream share by market. If you see the market share, most of the ice cream selling is impulse selling. Customer buy on impulse. So for that, it is very important that you are located near to the customer premises. So that was the one reason why we opted for this model कि हमने starting में, because brand को push करने के लिए it is very important. After that you can open anywhere. Now this is a rollout plan. We are, as Bharat explained, we are aiming for North India in phase 1, and in phase 2 we are planning pan India and tier 2, tier 1 cities. The rollout plan for Delhi NCR. Unit economics. So if we talk about the kiosk model, it's a 60 to 80 square feet model and involves investment of 8.5 lakh with a franchisee fee, which is included in this, which is 1.5 lakh. And margins are somewhere around 45 to 50%. Now we'll come to this. What are the roles and responsibilities of the brand? And for the FOFO model, so the store selection and approval, we guys will help you. Investment will be yours. Operating expenses, inventory will be managed by the franchisee owner. Will help you in central marketing. We'll do the basic marketing for you when your product is launched through influencer marketing, Instagrams, and multiple channels. Then promotional schemes will be provided by the brand. We'll do staff training for you, and we'll help you in social media outreach. So ideal partner fit. Obviously, we are looking for someone who is young and enthusiastic for developing the brand and if you have a prior experience, that is obviously an added advantage for us. Brand support, pre-opening and post-opening, will help you with store development, marketing and promotional activities, like mentioned earlier, training of the staff. Post-opening will, obviously, the new products that are developed and launched will be introduced to you as well. We'll have a consistent product supply with a good supply chain, and margins are attractive. And even if you see a payback period, it is very attractive. We have a 13 months payback period, which is like not offered by most of the brands in the industry. So this was a presentation. I'll just show you some videos of Bharat, if you allow me, can I? Yeah, sure, please. Feedback and something. Uh-huh. So these are very raw videos, please. Firstly, I'll show you the commercial video of the brand. So if you see, we also have a bell on the card just to grab attention and to show that it is something to do with vintage recipes or heritage, because in old times they used to have this bell. These are some customer raw videos I'll show you. सब हमारा क्या कोई वेजिटेबल ऑयल नहीं होता है, प्रॉपर मिल्क एंड क्रीम होती है। बट आप लोगों की चॉकलेट वाली आइसक्रीम सही में अच्छी है। मैंने बाकी तो टेस्ट नहीं करी, आपने खिलाई भी नहीं, बट ये अच्छी है। ठीक है, आप वीडियो सर एक हमारा पाइनएप्पल का है, पाइनएप्पल का टेस्टिंग होगा ना, एक बार आप चेक करवा दीजिए। सर ये हमारा पाइनएप्पल वाला जो है
इसमें प्योर मिल्क होता है सर, विदाउट एनी मिक्सचर। ये आपके जो पाइनएप्पल है ना सर, ये हमारा सबसे बेहतरीन पाइनएप्पल है, कोई अलग से वो फ्रूट वगैरह वो नहीं है सर, ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है सर, मतलब इसमें हमारा कोई मिक्सचर वगैरह नहीं होता, और इसमें जो मिल्क हम लोग यूज करते हैं वो भी विदाउट एनी मिक्सचर होता है। जेन्युइनली अच्छा है, इट इज नॉट अबाउट मार्केटिंग, आपकी मार्केटिंग जो भी हो, ये सही में अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। लॉन्च पार्टी फ्री आइसक्रीम है यही सर, मतलब वी आर प्रोवाइडिंग इट टू। एंड व्हाट इज द ब्रांड्स नेम? Bharat, is it visible or audible? I can see this, but audio is not there. I think something just. सर हमारा क्या था, कोई वेजिटेबल ऑयल नहीं होता है। लॉन्च पार्टी फ्री आइसक्रीम है यही सर, मतलब वी आर प्रोवाइडिंग इट टू। एंड व्हाट इज द ब्रांड्स नेम? इट्स मेल्टिंग स्कूप सर। अच्छा, इसकी तो कार्ड लगती है ना येलो कलर वाली। राइट सर, राइट। लेकिन वो तो सबसे पहले पाइनएप्पल ही केवल देता था, वही पाइनएप्पल। अब सर हमारे वही पास सर। और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं धीरे धीरे कंपनी में। एक इसको बहुत खिलाओ पाइनएप्पल। हाँ यार, एक खिलाओ ना, अबे ले लेते हैं कि कैसा मिले, कार्ड वार्ड दिखाओ कहाँ वहाँ बड़ा लगी है। एक हमारा सर यहाँ मैकडी के जस्ट फ्रंट में है। चॉकलेट वाली होगी। सारे फ्लेवर्स है सर। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, इट वाज गुड, योर ब्रांड इज गुड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। So you see, ये जो वीडियोस हैं जस्ट रॉ वीडियोस हैं, ऐसा नहीं हमने ब्रांड के लिए कुछ बनाई है। वी टेक जेन्युइन फीडबैक ऑफ कस्टमर्स which is important for us also to know how we are doing in the market. हाँ जी, लाओ जी पूरी दिखाओ। कितना सेकंड की? हमें चॉकलेट ब्राउनी। ये टेस्टर है सारे, राइट? कहाँ पे आपका? सर ये हमारा कार्ट लगता है पीछे, मैकडॉनल्ड है ना, मैकडॉनल्ड के बाहर हमारा कार्ट लगता है। रात को खुली रहती है? हाँ। या फिर अच्छा, स्विगी में भी ऑप्शन है? जोमेटो में दोनों में ऑप्शन ठीक है, लाओ जी। ठीक है, कितनी बड़ी चीज है। हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया टेस्ट है। कौन सा फ्लेवर है ये? चॉकलेट। टेस्ट तो लाजवाब है यार, टेस्ट तो बढ़िया है भाई। वर्थ इट है यार, मस्त लगी। वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है। अभी चलिए टेस्टिंग। बढ़िया। टेस्टिंग नहीं सर, हमारा टेस्टिंग यही पे होती है। नंबर अच्छा भाई, सर। नंबर। हाँ, बढ़िया चीज है भाई। आप हमारा क्या कहते हैं सर, ओरिजिनल फ्लेवर है, कोई वेजिटेबल ऑयल नहीं, 100% प्रीमियम मिल्क है। काफी ज्यादा चॉकलेट ब्राउनी ज्यादा बढ़िया है भाई। हाँ भाई खा के देखो यार। हाँ जी सर। एक बार वीडियो बंद कर दिया, मैं बैठूंगा। This is the last video of a particular पान pan फ्लेवर flavor. और चॉकलेट ब्राउनी फ्लेवर ट्राई किया। पान फ्लेवर इज ट्रूली अमेजिंग, ऐसा लग रहा है जैसे आप लिटरली पान खा रहे हो, और जब आप इसको खाते हो तो जो आफ्टर आफ्टर जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत अमेजिंग है। और मैंने अभी टेस्ट करी है और मैं अभी जाके परचेज भी करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So this was a video. I'll just share some customer experience that has happened with me. Once I was in a cart और मेरे पास एक मतलब अंकल आंटी थे, they were really मतलब very aged, 60 years old. तो वो अंकल आए and they were very well educated as I can make out from their way of talking and everything. And they came into a luxury car also. तो वो कार्ट पे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे and just went to them out of curiosity because I keep visiting my carts as a brand owner. I just want to keep a check how my customers are doing. So I asked कि सर आपको आइसक्रीम कैसी लगी? सो उनका एक इंस्टेंट रिप्लाई था कि आप ओनर हो? पहले तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा था, ऐसे यस सर मैं ओनर हूँ। कहते यार मैं आपको इस चीज के लिए कमेंट करना चाहूंगा, कह रहे बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम, कह रहे मतलब मजा आ गया खा के। और कहते मैं आपका एक रेगुलर कस्टमर, हर संडे अपनी वाइफ के साथ आपकी पर्टिकुलर केसर पिस्ता खाने आता हूँ। वी मेक वन ऑफ द फ्लेवर्स केसर पिस्ता। तो आप सिर्फ केसर पिस्ता ही क्यों खाते हो और कुछ क्यों नहीं खाते आप? तो उन्होंने मुझे बोला यार आपकी केसर पिस्ता खा के ना मुझे अपनी मदर की याद आती। उन्होंने कहा मेरी मम्मी क्या होता था पुराने जमाने में, जैसे होता था वो केसर का दूध बनाती थी हमारे लिए। और कहते हैं आपकी जो आइसक्रीम है ना वो लिटरली मतलब उन्होंने मुझे बोला कह रहे बेटा आपकी रेसिपी तो है नहीं है, आप नहीं बना सकते, कह रहे आपकी जनरेशन नहीं जानती ये चीजें। कहते आपकी ये आइसक्रीम जो बिल्कुल नेचुरल, ऐसा लग रहा है दूध मतलब आपने ना उसको कुछ
होमली तरीके से आप बनाते हो उसको। तो दीज थिंग्स रियली मोटिवेट अस ऑल्सो। और एक बार एक कस्टमर का मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला यार पाइनएप्पल आइसक्रीम में कुछ मिलाते हो क्या आप? तो आई गॉट स्कैर्ड, मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, आप बताओ क्या हुआ, कोई कंप्लेंट है? तो कहते नहीं यार, आपकी पाइनएप्पल आइसक्रीम एक बार खा ली, इतनी एडिक्टिव है, रुका नहीं जाता, हर हफ्ते आना पड़ता है आपकी आइसक्रीम खाने के लिए। So these were the few experiences that happened with me over the time, and I really take proud in this कि ये ब्रांड हमने डेवलप करी है, एंड वी our basic moral values are very strong. Even हम अपने स्टाफ के साथ इसको ध्यान रखते हैं that customer is never dissatisfied. Also, the team of Melting Scoop is very important for us. So we take utmost care of our staff and our team. So they keep working and working hard with us. So that would be all from my side, Bharat. Thank you. Thank you, Nishant. It was indeed a very good explanation of your, the brand presentation was really amazing. I mean, each and every aspects of, your brand and the offerings you have covered. Any possibility if you could also a little more deep dive into the Right. financials, Right. right? I'll do that. Just wanted to, see the calculation of I'll your share. cart and the salary of the staff. Is my screen visible to all? Yeah. Okay. So these are our financials. We are discussing here the kiosk model. So the area that is required is somewhere between 60 to 80 square feet. And we are assuming a rent of 50,000. Obviously, this will depend on the location. This is the franchisee investment. We are having a franchisee fee of 1.5 lakhs. And the infrastructure, display units, fridge, lighting, all the investment will come to a total of 8 lakh rupees. Apart from this, you'll have the initial inventory investment, which is of 50,000, and the property deposit, which is a security deposit, depending on the number of months they ask the deposit for. Revenue we are assuming, as I told you, the price, the cup starts from 80 rupees and goes up to 150, the waffle cone to 170. Because it is a kiosk, if you see, we have added mixers, one pancake maker. So obviously the menu items will go up. We'll have pancakes, waffles, certain things will be added. So we are having a ticket size of 150, and the number of orders which we are assuming is 80, which is very standard for the industry, not very high, obviously depending on the location. So our monthly average sales is 3.6 lakh rupees, 3,60,000. These are a yearly PNL. So we have a total revenue of 43 lakhs, and for the expenses, the food cost will be 55%. We are assuming that for a kiosk operation, you will need at least 2 people to operate. So a salary of 35,000 monthly. Rent will be 50,000. Utilities, we are taking 3%. Repair and maintenance, 1%. And marketing cost, we are assuming 5,000 per month, because major marketing that we do is very, no cost marketing. So the marketing cost for us is not very huge. It comes to a bit of 16%, and the attraction comes here with the payback period in months. If you see, it's 13 months, which is very good for the industry standard, because majority players are able to offer 18 months or 16 months. So the payback period is really good here. No, yeah, of course. I mean, with ice cream, I think ice cream category is one of the category which really give you, the break even is very fast if you will compare it with any other, the category. Also, I mean, I really appreciate, I mean, a qualified CA, good in marketing, have a very, calculative, plannings. I saw very calculative in each and everything, right? That is what, an investor should look into, right? Having a good founder is really important for a successful brand, right? So, yeah, in case if anyone would like to go for this, yes, you can contact us on our hotline number. I will share it soon. Also, Amit has already shared his number in the chat box. You can contact him immediately after this webinar, and we can have a discussion in length. I would really, I mean, I'm really impressed with I mean, with the feedback which you, shown us, right? And probably, Amit, in case we get some time, sometimes after the work, we can also visit to one of the cart or kiosk
to Absolutely, everyone is invited. Even Bharat na, everyone should मतलब must try this weekend. Because I would definitely जो लोग भी request. नोएडा के आसपास रहते हैं ना, तो everyone this is the must try. Will be more than happy. आप आइए कार्ट पे, and if you have my number, please do give me a call. I'll be Absolutely, I there with you. totally agree. I mean, in case अगर आप जाओ, आप बिल्कुल बोल दो कि कि you will be visiting it for look and feel या जो भी चीजों को Yeah, yeah. समझने के लिए. I think Amit can also help you, can accompany with you, and फिर इसको आप अच्छे तरीके से और भी explore कर सकते हो. नो डाउट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस, फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए, लाइक स्ट्रेटेजिकली इट शुड बी फिट. कुछ एक फिटमेंट होती है जब कभी भी हम एज ए फ्रेंचाइजी कोई ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं, तो कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं जो जनरली हम फ्रेंचाइज के तौर पे हम बोलते हैं कि SOMF, स्ट्रेटेजिकली फिट, ऑपरेशनल फिट, मार्केटिंग फिट एंड फाइनेंशियल फिट. मेरे ख्याल से इन चारों चारों फिटमेंट में आई थिंक ये ब्रांड अच्छे तरीके से उतरता है, राइट. एंड इन केस अगर आप अगर कभी भी प्लान बनाओ, मेरे ख्याल से आज सैटरडे संडे 2 दिन है, आपको अगर टाइम मिले तो बिल्कुल आप जाकर एक बार देख लो. उससे बढ़िया तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता कि ब्रांड को समझने के लिए या जो बस से देखिए, हर So हलवाई पे निशांत मिठाई को बढ़िया निशांत जी बताता है. दिल्ली बॉर्डर के पास कहाँ नियर बाई कार्ट लगती है हमारी? सेक्टर 18, ओके. मतलब जैसे सेक्टर नोएडा 18 मेंटर करते हैं, सेक्टर 18 इज नियरेस्ट टू दिल्ली. इफ यू में. आर कमिंग फ्रॉम इंदिरापुरम साइड, देन इंदिरापुरम में हमारी कार्ट है. वी हैव अवर वेबसाइट, उस पे सारी लोकेशन हमारी अवेलेबल है. इवन वी आर लिस्टेड ऑन गूगल मैप्स. सो इफ यू आर Okay. कमिंग, बहुत इजी होगा. आप मेल्टिंग स्कूप की साइड पे जाइए, जस्ट क्लिक ऑन लोकेटर्स एंड यू विल फाइंड द नियर बाय एरिया. अच्छा, सबसे अच्छी चीज ये निशान, आपका जो कार्ट वाला है, दैट इज इट इज मूवेबल. सो राइट, अगर एक जगह बिजनेस अगर नहीं होता तो आई एब्सोल्युटली. कैन मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज राइट. वेरी गुड फॉर इवैल्यूएटिंग द मार्केट. अगर हमने एक जगह एब्सोल्युटली, कार्ट लगाई एब्सोल्युटली. और हमें लग रहा है मार्केट अच्छी, देन विल ओपन अ पार्लर और शॉप ओवर देयर. श्योर, श्योर. If you want, I can like show you the website also, but should I? Sure. Just And then we'll take up questions that we have in the chat box or the Q&A box. so this is a website. Good one, good one. You guys can visit here. It's the same movie that I showed you. And if you click on locate us, so you'll find all the areas in Noida that our cart is. So we have 30 plus locations, as I mentioned earlier. So if you want to come to sector 18, if you're coming from Delhi, just click here and click on directions. So you will be guided through Google Map. Okay, okay, great. अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन जो हमारे चैट बॉक्स में है, हम उनको भी ले लेते हैं. व्हाट आर द पोटेंशियल सीजन फ्लक्चुएशन इन सेल्स एंड हाउ विल यू मैनेज देम? जैसा कि आइसक्रीम को माना जाता है कि ये गर्मियों में ज्यादा होते हैं, सो हाउ विल यू मैनेज? I'll answer this question. हाँ. Here only we have seen this trend. अगर आप देखेंगे, ठंड ज्यादा नहीं पड़ी है. सबसे पहली बात तो only in the month of January we had temperature dropped. अगर आइसक्रीम की आप बात करते हैं, फर्स्टली हाउ वी टैकल दिस इज सीजनल फ्लेवर्स. विंटर्स में स्ट्रॉबेरी होती है आपकी, और जो कस्टमर है ना आइसक्रीम का, सम मेजोरिटी पीपल आर देयर जो सर्दी में आइसक्रीम खाना ज्यादा पसंद करते हैं. व्हाट आई हैव सीन थ्रू माय एक्सपीरियंस. तो मैं आपके क्वेश्चन को 2-3 पॉइंट से आंसर करूंगा. फर्स्टली, बिकॉज वी लॉन्च सीजनल फ्लेवर्स, स्ट्रॉबेरी आ रहा है विंटर्स में, चीकू आ रहा है, वी लॉन्च दैट. तो कस्टमर के लिए ना एक्साइटमेंट रहता है कि यार चलो नया फ्लेवर आया है और ये विंटर्स में ही अवेलेबल होगा, तो आई शुड गो एंड ट्राई. सबसे पहली चीज वो है. सेकंड, हमारी जो आइसक्रीम बनाने का तरीका है, विच इज अ ट्रेडिशनल मेथड, उससे, और क्योंकि उसके अंदर केमिकल और पाम ऑयल नहीं है, सबसे बड़ी बात, तो आप आइसक्रीम खाओगे, आपके बहुत ही कम चांसेस है कि आपका गला खराब होगा हमारी आइसक्रीम से. बाहर की आइसक्रीम से आपका गला क्यों खराब होता है? उसके अंदर पाम ऑयल होता है, केमिकल्स होते हैं. अगर आप ऑयल खा रहे हो, आपके गले में रहता है, और उसके ऊपर आप ठंडी चीज खा रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट दैट. थर्ड मेजर पॉइंट्स के आप देखोगे, मेजोरिटी रोड पे जो कार्ट्स होती हैं विंटर सीजन में सब ऑफ हो जाती है. सो द ओनली ऑप्शन फॉर कस्टमर इज मेल्टिंग स्कूप ड्यूरिंग विंटर सीजन. ये हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केटिंग पॉइंट है, इसलिए हम अपनी कार्ट्स मार्केट से नहीं रिमूव करते हैं. एंड क्योंकि हैव मोर या क्वालिटी वॉल्स का जो कस्टमर, he'll have only one option, melting scoop. अगर उसने मेरी आइसक्रीम एक बार ट्राई कर ली आउट ऑफ समथिंग कि भाई आज ये तो अब नहीं है, 1 महीने कार्ड, तो मैं क्या करूं, द कस्टमर विल शिफ्ट टू मी, आई होप. सो दिस इज अ वेरी गुड मार्केटिंग प्लस पॉइंट, जिस वजह से हम अपनी कार्ड रिमूव नहीं करते.
And fourth point is considering the climate change, winter is hardly 1 or 2 months. Matlab this year only, if I quote in January, we have had very good sales compared to the past years. It was almost double what we had in January last year. So this is not a challenge as of now for the ice cream industry. True. इसके अलावा ऋषभ ने पूछा, how many flavors do you have? So at any point of time, we have at least 10 flavors in a menu, and we keep doing seasonal flavors. So it might go up to 12 or 13 flavors at a particular point in time. Okay, and how often you introduce your flavors? So these depends on the seasonal nature of the fruit. Like currently, if I talk about, we have chiku, strawberry, and guava. Now after May, mango will come. So will for May, June, July, these 3 months will have mango. So like this, the flavors keep on changing. But at any point in time, you will have minimum 10 flavors. आपके पास वैसे आइसक्रीम के ब्रिक्स भी होते हैं? Yes, Chocolate. we do Okay. bricks 500 ml family packs. Okay. These are available. Bricks and chocolate ice cream. Yes, chocolate ice cream is obviously available. We have two variants: chocolate brownie and chocolate. Oh, great. Okay. Yep. Any question from your side, Amit? I mean, for the cure. नहीं मतलब I personally tried this ice cream and this is the awesome. So मतलब Mr. Nishant already answered all the queries, right? I say I have been to Noida multiple times, but I will definitely this time, in case if I visit, I'm surely gonna. That's why I have a insist to taste. investor ki this is the must try. Sure. Then can decide for the Even franchise. you guys can go on Google and check the ratings and feedbacks. So it speaks more than what I can say. True. So I mean, you only have kiosk model or वो जो travel वाला था, रिक्शा वाला, cart वाला? Nishant, any idea about the investment for the cart? So cart, if we talk about the investment, it would be somewhere around 4 lakh rupees per cart. If we talk about the electric one, and we do have a manual cart option, जिसमें आपकी lighting and look and feel सब कुछ same रहती है. The only difference is the driving mechanism. It's not battery driven. It's a manual cycle driven. So उसमें investment आपकी roughly half हो जाती है, around 2 lakh rupees. This is I'm talking about per unit. और वैसे आप अगर अच्छा बस खाली मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि एवरेज सेल लाइक क्या है आपका, कितने स्कूप या कितने टिकट आप काटते हो एक दिन में? एवरेज अगर मैं बोलूं, बेस्ट और द एवरेज. Right, average I would talk about the average, not the best, not the worst. Average is 1 lakh per month sales. So a cart is able to do a sale of 3 to 4,000 on a daily basis. ओके, और कितने टिकट कटते होंगे, कितने बिल्स कटते होंगे वैसे? मैं एवरेज में बात करूं तो assume 40 tickets ओके on a daily basis. Obviously जैसे अगर मैं grocery 2 की particular नोएडा में बात करता हूं, so our sales go up to 100 tickets also per day. Wow, great. Because that area is again like I told you, we were focusing Gurgaon to Noida. So majority people live in societies in Gurgaon, which is a very premium area over there. Okay, someone is asking, if we start a cafe or the QSR model, what would be the area or the total investment required? And which product we can add for the parlor model? Sorry? So let's say if any investor would go to for the ice cream parlor model. For the parlor model, the size and how many products we can add in our talk about the size of the parlor model. A small shop, 100 square feet we can do, and if you're talking about a sitting of 6 people, we can go up to 150 or 200 square feet, and for a very big parlor we can go up to 300 or 400 square feet. So as the parlor size increases, basically the seating capacity increases. And if we talk about the products, we have obviously ice cream in the menu, and like I mentioned earlier, for the kiosk model as well, we can add pancakes, we can add waffles, we can do sundaes. So these are few things which is in synchronization with ice cream. We can do these. And can we do add some other fast food items? We'll have to develop, and we can maybe do that, because it should be under the Melting Scoop brand name only.
If you are doing a cafe, we can obviously have a coffee machine. We can add certain things. That obviously depends on the model, but that is a option. We can obviously do that. If you are opening a cafe, you do need, shakes, coffees. So these things should be there. We can True. even do bubble tea or iced tea, which are nowadays in trend. So this field needs to be explored, but we can do that. All right, so probably we already have answered all the questions now. So it is time to wrap up now. Thank you so much, Nishant, for being available and sharing the wonderful, the business model and the business you're offering Thank, for the thank you everyone franchisees. for your time. Yeah, thanks so much, Amit, for also being with me throughout the webinar. I would really appreciate all the attendees who stayed with us almost 50 minutes. Listening to us, understanding the business and the brand. Right, we really appreciate it. And also, in case if anyone would like to go for the business, I already have shared this in the chat box, the hotline number and the email ID. You can note it down, and you are absolutely welcome to take a round of any of the store you would like to go, in Noida or nearby, right? So go and have an experience, and then you decide what to do next. But I'm telling you, this category or the business can be a very is a very promising in terms of returns, and and at a very low investment. So you definitely should go for it. So that's it for the day, guys. Everyone, thanks so much, everyone, for joining. Tomorrow we will again, not tomorrow, on Monday, we will again come up with a new brand and explore another business opportunity. Till then, take care and have a nice day ahead. Thank you, everyone, for joining. Bye bye.